So hey guys, welcome to this brand new video on code matrix. So आज हम एक नया एडवांस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. whether you are like a architecture, you are a cloud administrator, ये सब पे काम आने वाला है. Okay, the concept ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है like which we have we did one lab previously. Okay, so वो lab का advanced topic है. If you remember that we have deployed IIA server, Windows IIA server on the virtual machines, remote virtual machines, but using with the using of RDP. हमने उसमें क्या किया था, like RDP लिया था. RDP लेके फिर उसको मैनुअली पावरशेल के थ्रू इंस्टॉल किया था. बट इन दिस केस हम लोग RDP नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली विद द यूज़ ऑफ क्लाउड सेल विच इज़ द पार्ट ऑफ Azure क्लाउड. ठीक है, इसमें से डायरेक्टली हम लोग VM को एक्सेस करके उसको विद द यूज़ ऑफ पावरशेल स्क्रिप्ट हम डिप्लॉय करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे Windows IIA server and टेस्ट भी करेंगे. एंड वी विल ऑल्सो गोइंग टू अलाउ द certain ports, तो ताकि हम लोग पब्लिकली विद द यूज़ ऑफ पब्लिक IP वी कैन एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आवर कोड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस पे ये रिक्वायरमेंट आ गया है. And let's say you are an administrator and that code matrix organizations that is migrating actually like virtual machines to the Azure. So obviously we are migrating the virtual machines to the Azure, and with the use of there is some use cases आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू से कर सकते हो, but in this process we are using Azure Cloud Shell to manage the virtual machines with the PowerShell. Okay, so first we will configure Azure Cloud Shell for use with PowerShell, and next we will going to install a web server, and then we will test the connection of the web server. Okay, so आप जैसे देख सकते हो, this is the flow chart, and this is called a workflow of this our scenario. So obviously we will going to use a cloud shell of that Azure, and with the use of PowerShell script we will going to install a Windows IIA server on this virtual machines. Okay, हम जब PowerShell execute करेंगे, अगर virtual machines present है then obviously it will going to install this server. If no, it will going to say invalid VM or not install OS. Okay, so once जब हम IIA server इंस्टॉल करेंगे then we will going to again with the use of PowerShell script हम क्या करेंगे, पोर्ट को allow करेंगे, and obviously port will allow then showing success, and it is if no then it will going to show port not allowed. Okay, this is the workflow. So let's start it from here to here. So एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बोला था, क्लाउड सेल. ओके, देयर इज़ अ मल्टीपल वेज टू एग्जीक्यूट और डूइंग दिस टास्क. सो we will get to know that the concept are called cloud shell. This is the cloud shell, आप देख सकते हो. Okay, and you can see this is the cloud shell, and please click here. Once you have clicked, then it will come with two option. Okay, this is a powerful this is called for the Linux bash script, and this is a PowerShell for the Windows. Okay, so we will going to use PowerShell execute. We will going to execute the PowerShell script. So obviously PowerShell we need to select, and if this option will come, and ये option पे actually आपको like previously ये option different show करा था, but अभी के time में ये with the new update some changes happen with the Azure Cloud, ये अभी ऐसा शो करता है. देन आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली
we need to create a storage account first. Okay, I have to select this one and apply, and I have to select existing storage account, yes, and selecting this, and storage account, yes, and file share में आपको create करना पड़ेगा file share, and इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं Cloud Shell दे रहा हूँ, and I'm creating. It is now deploying, it is in progress. Okay, so let's deploy happen. So मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. सिलेक्ट द वर्चुअल मशीन्स. हम लोग के पास ऑलरेडी वर्चुअल मशीन्स डेप सिस्टम 1 है. ओके, हमको इस वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना है, बट विदाउट टेकिंग अ RDP. ओके, प्रीवियसली हम लोग क्या किए थे, प्रीवियसली हम लोग मैनुअली RDP लेके इसमें पावरशेल ओपन करके विद द यूज सम पावरशेल स्क्रिप्ट हम डिप्लॉय इंस्टॉल किए थे वेब सर्वर को. बट इन दिस केस दिस इज़ मोर एडवांस फ्रॉम प्रीवियस वीडियो, एंड ऐसे ही कर सकते हो लाइक इन योर ऑर्गेनाइजेशंस इफ देयर इज सम रिक्वायरमेंट. ओके, सो फॉर दैट I need to do some changes here. So for that हमको PowerShell कमांड रन करना पड़ेगा. ओके, सो मेरे पास ऑलरेडी कोड है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ओनली. ओके, सो ये कमांड का मीनिंग क्या है. ओके, मैं ये ईच एंड एवरी कमांड जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ओके, आई विल प्रोवाइड दिस एंटायर कमांड in the description. You can use and you can test with your system. Okay, बस ये है कि the resource group name should be changed and the VM virtual machine name should be changed and everything will be same. Okay, so what this means, invoke Azure VM command. So this command is used to invoke a run command on a virtual machine. Got it? And you know that resource group, what is resource group? Okay, where all the resources are present, and we creating particular group, and within that group we deploying some resources over there. Okay, and this is the virtual machine name. Okay, and this is the command ID, and this command ID that you want to run on virtual machines. Okay, so मैं यहाँ पर run PowerShell script, and this seems to be the ID of the PowerShell script command that you want to execute on the virtual machines, and ES scripting, hyphen scripting, and this is the with the curly bracket. You can mention this command to install the Windows web service on this virtual machines, and which is in this resource group. Okay, so मैं यहाँ पर enter execute करता हूँ. It will take time. So मैं यहाँ पे वीडियो को pause कर देता हूँ. Okay, you can see here it is success. Okay, the message is showing that it is success and provision succeed, and the message also it is in success, true. Okay, and the status is showing the value is 1, succeed. So next what we are going to do, we will execute one more command. Okay, which is it will this command is used to run like PowerShell command to display the default website. Okay, so Control L will clear the workspace and get website, and each and every command which I am using here I will provide in my description. Please try do this labs in your system. So okay,
Okay, cool. This is also succeed. Okay, so इसको करने में क्या benefits है, like, okay, why we are using this thing? Okay, see, first of all, automation. Okay, error free automation, and it like इसको टाइम नहीं लग रहा है. ओके, सो अर्लियर व्हाट इज़ देर इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट इसमें टाइम ही नहीं लग रहा है. गॉट इट. सो लेट्स एज्यूम दैट मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स लाइक 50-60 वर्चुअल मशीन्स. नाउ मेरे को रिक्वायरमेंट आ गया कि मुझे लाइक कैन यू इंस्टॉल और पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन्स में लाइक मेरे को डिप्लॉय करना होगा, कुछ भी इंस्टॉल करना होगा, तो कैसे करूँगा? लाइक दिस. ओके, यूजिंग ए रिसोर्स ग्रुप एंड द वर्चुअल मशीन नेम एंड running some PowerShell script, then it is good to go. Yes. Now the third command is we have to allow the HTTP rule on NSG, network security group. So मेरा यहाँ पर again I am copy and pasting this command. Okay. So with this command हमने यहाँ पर देख लिया रिसोर्स ग्रुप नेम, दिस इज़, एंड द नेम ऑफ द वर्चुअल मशीन्स और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, दिस वन, एंड लोकेशन HTTPS एंड स्टेट इज सक्सीड. हम देखेंगे अभी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप NSG. तो यहाँ पे हम लोग का डेप सिस्टम 1-NSG1, जो कि यू कैन सी हियर, मैनुअली चेक कर सकते हो, लाइक वेरीफाई. ओके, एंड वाई दिस इज़ NSG रिक्वायर्ड. ओके, NSG नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्यों यूज़ होता है? टू कंट्रोल द ट्रैफिक. ओके, आपको लाइक, so yes, this is the use of NSG, which is we call a network security group. आप यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक कौन सा ट्रैफिक आपको अलाउ करना है, कौन सा ट्रैफिक आपको डिनाई करना है. सो विद द यूज़ ऑफ सर्टन पोर्ट एंड रूल्स आप यहाँ पे रूल क्रिएट कर सकते हो एंड यू कैन कंट्रोल. ओके, so this is the concept of network security group. Inbound and outbound rule is the important thing. Okay, so आप देख सकते हो यहाँ पर जो in the code section. Okay, allow HTTP access, allow protocol TCP data action, inbound priority 100 and source specific internet and anything. This is called anything. Okay, and okay, yes. So now it is in allow state and हमको अभी क्या करना पड़ेगा? अगेन हमको वर्चुअल मशीन्स पे जाना पड़ेगा एंड वर्चुअल मशीन के अंदर जाके हमको we have to copy this public IP of this virtual machine only. Copy this virtual machines. See, हम लोग अभी तक RDP मशीन का RDP लिए भी नहीं है एंड हम लोग विद द यूज़ ऑफ क्लाउड शेल हम लोग इंस्टॉल किए हैं Windows IIS server on that remote machine. Okay, without taking a RTP. So हम उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, like we are going to test whether this application or server or IIS server is working or showing or not. Okay, for that we need to test the connection.
आप कोई सा भी ब्राउज़र, एक्सटर्नल ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, लाइक इनकॉग्निटो मोड और प्राइवेट ब्राउज़र पे. एंड आई एम जस्ट copy and pasting this public IP address, and let's check the content. Okay, it is showing this content. Okay, yeah, that means हम लोग का वर्चुअल मशीन्स में, हम लोग वर्चुअल मशीन में पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन में हम लोग इंस्टॉल ISA सर्वर को इंस्टॉल किए कर लिए. ओके, दिस इज़ द एक्चुअल कॉन्सेप्ट. एंड लेट्स assume that let's assume that you have a multiple virtual machines. You can just change the virtual machine resource group name and virtual machine name, and you can good to go and install the server with the use of just command. Okay, certain script आप within a second आप इसको install कर सकते हैं. Okay, I will going to provide this entire scripts in my description. You can try by your own. And yes, so if you like this type of content, or like, let me know. I will try to create more and more on this Azure part, specifically security, Azure architect, Azure administrator, and Azure DevOps. Okay, all concept I will going to cover here. So please like and subscribe to my channel, and please try these labs and let me know in the comment chat. Thanks you.